ठीक है, सच कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं. आफ्टर सैयद डायनेस्टी वी हैव द लोधीज led by initially by Behlul Lodi. Then we have Sikandar Lodi, who is famous for shifting of capital from Delhi to Agra. And last person is Ibrahim Lodi, who was taken down by the activities of Babur. The first battle of Panipat is responsible for its downfall. Okay, Lodi का जो major वो है contribution है, it is in the field of architecture. Okay, Lodi Gardens वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, double domes को इन्होंने utilize किया, तो major वहाँ पर है. In terms of governance, as I've told you, they were followers of the Afghan theory of kingship. एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, दैट एरिया विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, इट वाज नोन एज खलीसा. ऑल द रेवेन्यू विच यूज्ड टू कम फ्रॉम हियर, इट यूज्ड टू गो डायरेक्टली टू किंग. The rest of the regions, they could be divided into various iktas. Okay, iktas में इसको divide कर देते हैं. The collection of revenue, it was done by iktadar. Suppose an iktadar collects 100 rupees. 100 rupees collect करता है एक area से. This person is going to minus his own expenditure. Suppose the overall expenditure is roughly 80 rupees, which includes his own personal salary, the salary of his troops. इस तरीके से और expenditures of the various part of his area. कितना remaining बन गया? 20 rupees. These 20 rupees were known as fawazil, and this fawazil was to be deposited with the central revenue. इस तरीके से revenue system work करता था. आज का अगर रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे, जैसे जब से जीएसटी आया है, जीएसटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी, और जब इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी उसके बीच में आता है. तो रोल यही है, कलेक्शन होता है, बाद में उसको हम डिवाइड करते हैं. यहाँ पे क्या था, कलेक्शन का भी काम किसके हाथ में था, स्टेट के हाथ में था, और जो बच जाता था वो कहाँ डिपॉजिट करना है, सेंटर के पास डिपॉजिट करना है. दिस फवाजिल वॉज नॉट कलेक्टेड बाय द लोधीज. Why? Because they were believer in first among the equals, कि आप अपना रखो, हम अपने से खुश हैं. Okay, so that's why whenever there was change in the theory of kingship, there was also change in the revenue administration along with it. Under all of them, initially जो पहली 4 डायनेस्टीज हैं उसमें लगभग यही फॉलो होता था. ठीक है, और जो लास्ट लोधीज है, they did not collect the fawazil. उन्होंने कलेक्ट नहीं किया कि भाई ठीक है, whatever revenue is collected by you, it belongs to you. It should not come to the center. It's not a requirement. Now, when we talk about administration, एक ही जगह पावर सारी कंसंट्रेटेड थी, एंड दैट वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप और मोनार्की इटसेल्फ. तो अगर हम रियलिटी की बात करें तो ऑल द मिलिट्री पावर, जुडिशरी पावर, इट वाज हेल्ड इन सुल्तान. दे वर हैविंग द फाइनल से इन एवरीथिंग. देयर वाज नो सच एस्टैब्लिश्ड, बट some sultans they also claimed the divine rights, and that person was Balban. This was changed by Alauddin Khilji. Khilji said, focus on practical state benefits, ignore the religious limitations. They were able to create pan-India empire. कुछ areas इसके हमेशा बाहर रहे, that is Kashmir and Kerala. They were outside, and few small pockets in between. Okay, जहाँ पे बहुत heavy forested areas हैं, they were not under the control of this directly. एकता सिस्टम मैंने आपको समझा दिया. That is एकता सिस्टम. Okay, what was the role? The land was granted by the सुल्तान कि ये एरिया आप कंट्रोल करोगे. दे हैड टू कलेक्ट द टैक्सेस. इनको इक्तादार भी बोलते थे और मुक्तीज भी बोलते थे. जो टाइटल था, इट कुड बी इधर मुक्ति और इक्तादार, दोनों बोल सकते हैं.
military obligation था, that is very much there. You have to maintain troops and you have to ensure whenever there is a war, आप अपने troops को हमारे साथ लेके आओगे. Direct control area में क्या बोलते थे? खलीसा. Sultan's land, tax revenue यहाँ से जो collect होता है, it was for the upkeep of the administration of the central department. जितने भी department बनते थे वहीं से वो उसको collect करते थे. एक्सपेंशन के साथ में रेवेन्यू चैलेंजेस भी आते थे, टैक्स कलेक्शन कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इनका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इट रिक्वायर्स डिटेल डिस्कशन. रिलीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज द पीपल ऑफ हु फॉलो इस्लाम, दे बिलीव इन मोनोथिज्म, दैट इज ओनली वन गॉड, बट द हिंदू सोसाइटी इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया बिकॉज बहुत सारी डाइवर्सिटी है. यस, देयर आर सम पीपल हु आर बिलीवर इन मोनोथिज्म लाइक वीर शैव सेक्ट व्हिच स्टार्ट्स इन कर्नाटका in the 12th century, the 12th and 13th century. That is a very prominent one. Caste distinction were denied by them. Similarly, this same kind of movement also rose in Tamil Nadu, known as Siddhars. एक कल की क्लास में we are going to have a specific part of Bhakti movement. तो वहाँ अच्छे से इसको अलग से करेंगे. But in general, they're talking about how the adjustment happened between the two religions. As we all know, we see the rise of Bhakti as well as Sufi movement in medieval India. तो वो एक तरीके से एक दूसरे की क्वालिटीज को एक्सेप्ट किया हम लोगों ने. So we see a coexistence of Islam as well as Hinduism during the Delhi Sultanate, like the conqueror Muizuddin or the Muhammad Ghori. His coins used to have the symbols of Lakshmi. Lakshmi के symbols थे on his coins. If we talk about Muhammad bin Tughlaq, as I told you, he used to play holy in his court. He had to ensure the protection for all the Jain priests. And the historian Barni is a historian who is not who did not like the Hindus in general. That's why he is criticizing these people. Just see his remark. He noted with some bitterness how the king of Islam showed respect to Hindus, Mongols, polytheists and infidels by making them sit on the cushions and by honoring them in other ways, and how the Hindus upon paying taxes were allowed to have their temples and celebration. On the other side, they could even employ Muslim servants and flaunt their titles like Rana, Thakur, etc. right in the capital seats of Muslim rulers. So it shows that this person is more of exclusivist in nature कि भाई नहीं Muslims जो हमेशा top पे होने चाहिए in terms of governance. But such policies were not followed by all the sultans. As we can see, they were liberal, they were broad-minded, and that is something which we need to understand. Sufism, the moment we see the comes of the Turks, along with that we see the entry of Sufis. Sufis had many silsilas. Silsila means school of thought. तो ओवरऑल जो टोटल थॉट्स है और प्रोसेसेस है वो 12 से 14 सूफी सिलसिला है. सबसे फेमस दो ही हैं, एक सोहरावर्दी है, दूसरा कौन सा है, चिश्ती. ये दो सबसे ज्यादा फेमस है. इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस थे. द चिश्ती they were a believer in poverty, that we should focus only on one thing, and that is our connection with the God. इसके लिए वो म्यूजिक को बहुत यूटिलाइज करते हैं, जैसे समा बांध देना है ना. जब बॉलीवुड मूवीज में सारी जितने भी गजल्स वगैरह चलती हैं, देयर आर मोस्टली लिंक्ड विद सूफिज्म ऑफ चिश्ती. बट सोहरावर्दी ऑफ डिफरेंट काइंड. दे यूज्ड टू से वी शुड एक्सेप्ट स्टेट पैट्रोनेज एंड देयर इज नो लाइफ इन पॉवर्टी, वी शुड एंजॉय आवर लाइफ, है ना, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं. तो दीज पीपल वर सोहरावर्दी. So depending upon the mentality, there were different set of practices followed by the Sufis. The most noblest of them, they were the Chistis. Famous personalities like Nizamuddin Aulia, all of them they belong to Chisti order. So the Chistis, they used to have very specific functions. They used to have their stations known as Khanak, जैसे कि hospice भी बोलते थे जिन एरियाज में सेटअप. जैसे कि if you go to Ajmer is very famous for that specific hospice और खनक बोलते हैं उसको. ठीक है, that is what is Sufism is famous for in medieval India. बाद में इसको कभी एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में, जो कि एग्जाम स्पेसिफिक होगा. अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन के से काम चला लेते हैं. इकोनॉमी, इफ वी सी, इकोनॉमी वाज वाइब्रेंट व्हेन द टर्क्स केम. ओके, they revived the internal trade. Why? Because previously India, it was divided into various principalities. So since a unified empire creation started, it revived the internal trade. It also led the process of urbanization, because the early medieval period we see decline of many areas in India, but from now this time onwards we see the rise of urbanization, and this phase is known as third urbanization in Indian history. First urbanization belongs to Harappan civilization, second belongs to 6th century BC. This 6th century BC urbanization starts going a bit on the downhill, many of its cities by 3rd century AD.
So from 3rd century AD till 12th century AD, we see decline of many cities. In fact, when we discuss the debate of feudalism, there we see the use of the word urban decay, कि urbanization हमेशा decline कर रही है. So finally, in the 13th century, again we see rise of many cities. So this is the third phase of urbanization. After that, we do not see any decline of urbanization in India. In medieval period, urbanization in India was roughly around 15%. 15% के आसपास हमारे यहाँ urbanization थी, which was almost similar to that of Europe. यूरोप में भी लगभग 15% थी और इंडिया में भी 15% थी. The only problem is from 18th century we came under the British rule. So for the next 200 years we could not achieve anything significant. Okay, and that's why urbanization did not increase in India. After that it remained stagnant. And आज देखोगे तो previous, as per previous census, it is roughly around 32%, 31 point something है. And since already 12 years have gone by, एक बार census होने दो, there will be change in definitions. I think it will roughly come around, अब लगभग 35 to 38% के बीच में तो हो चुका होगा, because it's been a long time. So urbanization में दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, करा, लखनौती, अनिलवाड़ा, कैम्बे, all these became very prominent centers of urbanization during the Delhi Sultanate. External trade also flourished, because whenever we have a strong monarch in power, eventually that also increased the external trade. Safety gets increased. Many merchants, they came from different set of areas. Industrial expertise also came with the Turks. They were very good at paper making. Okay, they had learned it from the Chinese, and from there it came to India. They were also masters in the spinning wheel. Again, they had learned it and they came out with this spinning wheel, and that is something which helped us building activity. For the first time we see the use of lime mortar. The manner in which the buildings were constructed in India, the whole designs, they were changed. India में हम जो बनाते हैं system, like we are a believer in this flat roof, है ना, ये structure हमारा create होता है in India, but this was changed by them. Okay, this style, it is known as Trapezius style. This Trapezius style was changed by the arcuate style. Here we have columns and beams, but here there is a marked shift. Okay, we see the marked shift in this area, and here the major elements of this Indo-Islamic architecture, they shift towards, like here at the top we have dome, minarets, arches. So चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं. यहाँ पे सिर्फ कॉलम और बीम्स के ऊपर है. यहाँ द फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग दे विल चेंज. डॉम्स, मिनारेट्स, आर्च, जैसे कि कुतुब मीनार है, दैट इज अ काइंड ऑफ मीनार. मीनार आर यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ एनी आर्किटेक्चर. जैसे अब आप देखोगे ताजमहल, ताजमहल हैज 4 मीनार्स एट द 4 कॉर्नर्स. टॉप पे क्या होता है? डॉम होता है, और जो उसका एंट्री होता है उस पे क्या होता है? आर्चेस होते हैं. दैट बिकम द फंडामेंटल्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. Initially, majority of the Indian temples, they were destroyed, and we see the development of domes. On जैसे कुवैतुल इस्लाम मॉस्क अगर देखोगे, it's more like an interchanging of the temple itself. 2.5 दिन का झोपड़ा देखोगे अजमेर में, which was created by Qutbuddin Aibak. Again, it was a reconstruction or the complete overhaul of a temple into a more of a dome or a kind of these kind of structure. But with the period of time, they developed their own architecture, and by the time of the Tughlaq dynasty, they were able to have a specific kind of architecture. वो भी कभी discuss करेंगे architecture, because that itself requires a full class. But in general, new technologies including paper making, spinning wheel, building activities, all of them, they became prominent in India. Textile production increased gradually. Education also, but still in education there was one drawback. Majority of the education, it was departed by whom? It was given by whom? It was given by the religious area. So that's why secular education did not progress that much even during this time. Education was intricately linked with the religious. So maktab, it was a basic level reading and writing. Madrasas became the major centers of learning, and many madrasas were founded. And as we know, Firoz Shah Tughlaq built a large madrasa in Delhi. Delhi में काफी large उन्होंने madrasa setup किया था. Hindu society, it remained mostly same. There was no major change. The only thing which changed eventually is the position of women. Like with the coming of the outsiders,
they became even more protective, parda system, etc. These kinds of things, they completely got involved in this, and that's why even in Hinduism we see the entry of parda system. Caste structure, more or less, as we understand, caste system was prevalent in India since the ancient times, and that diversification or the more stratification of caste, it continued even within Islam also, which was free from stratification. उसमें caste का concept था ही नहीं. That also got the caste now. So today we have caste even among the Muslims, and that is something which they have taken away from Hinduism, और Hindu society से उसमें enter कर गया. So that's how things happened. Slavery continued. Slavery was something which continued even this time. Marriage का जो processes है, they were different both in Islam as well as the your Hinduism. In Hinduism, the practice of divorce is not that much appreciated, while since in Islam it is more of a social contract, divorces used to be very, very easy. By saying talaq 3 times, you can take a divorce. So those were the fundamental differences in the Hindu society and the Muslim society. In Muslim society, in terms of inheritance, the daughter could get the half, they could get the fair share. But in case of Hindu society, majority of the inheritance, it used to go towards the sons rather than the daughters. So those were two major changes, marriage and inheritance. वो भी पता होना चाहिए. Architecture, as I have told you, arch domes, vault, and the use of lime mortar. Those were the beginning. Initial phase like Quwaitul Islam Mosque, those were just the changes in the structures of the Indian temples. Later on we see evolution of techniques like Tomb of Balban. पहली बार उसमें अच्छा आर्च यूज होता है. Then we have Ali Darwaja. Like you can see, this is the first structure which is having a true dome for the first time. Okay, so after that we see even more better kind of monuments developed in India with a period of time. The tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, it has sloping wall. Sloping wall इसलिए करते हैं, उससे एक बैटरिंग इफेक्ट निकल के आता है, मैसिव लगता है कोई भी monument. So that monument belongs to the Tughlaqs. So this is how they were changing their own system. Sculpture and painting, as all of us understand, in Islam, making pictures of live humans as well as the animals, it is not allowed. It is considered as un-Islamic. That's why there is no major development in sculpture as well as painting during this time. But this is going to be liberalized with the coming of Mughals. Okay, because the Mughals, they came under the influence of Shia form of Islam, which allows paintings. So during the Mughals, we'll see relatively more progress in painting, but during this time there is no such progress. Music, yes, music we do see progress. Okay, today if you read Indian culture, there are two specific kind of classical music that we have, Hindustani and Carnatic. Carnatic is going to develop in the area of Karnataka. Okay, while this Hindustani music, this is nothing but an amalgamation of tradition of North India and the coming of the system from the Turks. That's what becomes the Hindustani. So पूरा जो घराना system है in the Hindustani, it starts from this time onwards. New musical instruments were brought in, rabab, sarangi. Famous poets like we have that of Amir Khusro. Sufis also, they use the word sama. Sama means devotional kind of music which connects you to the God. There's a khwaja mere khwaja. This is nothing but this is a kind of sama bandhina, where you eventually utilize music to connect yourself to the higher powers. Then Sufi saints like Pir Bhodan, he is known for musical talent. Royal patronage was given by many people. There is a specific text, Rag Darpan. This was now translated into Persian. इस time पे उसको change किया गया था. Dances, as I have told you, dance वगैरह चलता रहता था. काइकू बाद तो competition भी कराने लग गए थे, है ना. उसी टाइम से उन्होंने India's Got Talent की पहली स्क्रिप्ट उन्होंने ही बनाई थी, है ना. So that starts from काइकू बाद. Literature. So most development of which form of literature? Persian. Persian literature is going to rise during this time. This Persian literature, yes, it's going to be also historical in nature. जितने भी major historians हैं, they're going to utilize which language? Persian. So Persian is going to rise during this time. Simultaneously, Sufis. These Sufis are going to be responsible for the rise of many Indian languages. Like Baba Farid, he is linked with Punjabi language. Okay, so these Sufis as well as the Bhakti saint, they will be linked to local languages, but the court languages, it is going to remain Persian. In fact, Persian will remain a court language even till the coming of British. And finally, William Bentinck इसको Persian से English में change करेंगे. तो ये तो आप rule ही बांध लो कि शुरुआत से ये main रहेगी. So many compositions were done by him.
हमने बात भी किया था, बार्नी एज वेल एज अफीफ हैज रिटन तारीख फिरोज शाही, बोथ ऑफ देम दे आर इन पर्शियन. So Persian will remain the most important language during this time. Translation will be done because the emperors, they were curious in understanding what was the Indian culture, what does it feel like. So lots of translation is going to be done. Okay, translation will be done even of the Ramayana as well as Mahabharata to understand these epics कि इनके अंदर क्या stories है, and eventually these stories will be turned into paintings by the time of Akbar. Akbar, he was somebody who was not literate, so that's why he could only see and understand rather than read and understand. Sanskrit literature also continued, like Palam Bauli inscription praises the Sultan Balban's rule. Cross cultural influence continued. So काफी सारी चीजें कंटिन्यू करें, जैसे अरब से भी कुछ लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे बोरो वर्ड किए वर्ड्स, संस्कृत लिटरेचर भी हमेशा ट्रांसलेट होती रही. सो इन दिस वे अ काइंड ऑफ वर्ड विच यू कुड ऑलवेज रिमेंबर, इट इज सिंक्रेटिक कल्चर. Another word which we use is development of composite culture. आज की डेट में बहुत मुश्किल है ये बताना कि कौन सा कल्चर हिंदू है, कौन सा कल्चर मुस्लिम है. एंड दैट काइंड ऑफ कल्चर इज नोन एज सिंक्रेटिक. वो इस तरीके से एक दूसरे से मिल चुके हैं दैट यू कैन नॉट एक्सट्रिकेट इट, यू कैन नॉट सेपरेट देम. दैट्स व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ ए कंपोजिट कल्चर और ए सिंक्रेटिक कल्चर इन इंडिया, इट स्टार्ट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. कभी भी कंक्लूजन करना हो, यू कैन यूटिलाइज दीज टर्म्स. जब भी आपको आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हो, यू कैन यूटिलाइज दीज टर्म्स. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में काफी अच्छे लगते हैं. कोई भी कल्चर का क्वेश्चन हो, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे किसी भी चीज का, वी विल ऑलवेज यूटिलाइज द वर्ड सिंक्रेटिक एज वेल एज कंपोजिट कल्चर. सो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आज यही फिनिश करते हैं. अभी आगे क्योंकि चोलास को करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लाइक रफली एटलीस्ट 1 more hour. So tomorrow we'll start from here. I hope it is clear to all of you, because मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ कि नॉर्थ and Deccan, they are very much connected. And then we have the theme of South India. Here we started with the invasions. We talked about Arab invasion, then we talked about Turkish invasion, then we talked about the establishment of Delhi Sultanate. Initial हमने start किया था about the 3 empires, Palas, Pratiharas, how they went into the self-destructive zone. There is a concept known as MAD, mutually assured destruction. This concept is very much applicable to these Palas, Pratiharas and Rashtrakutas. खुद से लड़ाई करके खत्म हो गई कहानी. Then we see invasions, okay, of second type, which is led by Turks, establishment of Delhi Sultanate, and eventually from Delhi Sultanate we see rise of Vijayanagar as well as Bahmani. Okay, in South India we have already discussed about Pallavas. From Pallavas the throne will be taken by Cholas, and from Cholas it will be eventually taken by Pandyas. After Cholas, some area of Chola will also come under the control of Vijayanagar. So tomorrow we'll first deal with the history of this. Okay, so ध्यान रखना, बिकॉज कभी भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसी एरिया को एक्सप्लोर करके आते हैं. ओके, लाइक विद द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत you'll also have a power vacuum, and here we also see the rise of Bahmani. This Bahmani will be in Deccan, while Vijayanagar, this will be in the deep south. So tomorrow we'll first go for Cholas, then we'll talk about Pandyas, and फिर हम करेंगे विजयनगर एंड Bahmani. छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है. ठीक है, एंड डे आफ्टर टुमारो विल शिफ्ट टुवर्ड्स मुगल्स एंड मराठास. मोस्टली प्लान ये है कि थर्सडे तक आपका ये फिनिश हो जाएगा. ऑन थर्सडे आई विल गिव यू अ ब्रीफ टेस्ट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस, वो आप लिख के लेके आइए. फ्राइडे को हम आंसर राइटिंग करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर आने का टाइम आ चुका है ना, थोड़ा नींद से जागो, लिखना शुरू करो हल्का फुल्का. बेसिक क्वेश्चन, जैसे अलाउद्दीन खिलजी पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो लिख ही लोगे ना. इवेल्युएट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो.
इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. आई विल गिव यू इजी वंस जो आपके पीपीटी से ही खत्म हो जाएगा. उससे दिल नहीं टूटेगा कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसका क्या करें, किस तरीके से करें. So tomorrow we'll finish Cholas, Pandyas, Vijayanagar and Bahmani. That is our main topic. And day after tomorrow on Thursday, we'll focus on specifically only one area, and that is Mughals. Mughals पे focus करेंगे. Hi, a very good evening to all of you. I'm Vikas Elawat. I'm a former civil servant. I was able to crack UPSC twice. In fact, in 2018, I was able to get highest marks in history optional, and they were around 324. So this year I'm coming up with a series which I am calling Self Study History Optional. इस series में 100 से ज़्यादा वीडियो होने वाले हैं which are going to cover the different nuances of ancient, medieval, modern as well as world history. So those of you who are preparing for 2025, register करिए and try to get the maximum out of this specific initiative of ours. So at Prep Career IAS, we are producing results from last many years. 2023 में बहुत सारे टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से थे. 2022, 21 हर साल बहुत अच्छे टॉपर्स यहाँ से निकले हैं. And they have been able to get very good marks in history optional. So those of you who are thinking कि यार start करके कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, we already have achievements with us. I was able to achieve, my students are achieving, and you can be the next. इन सेशंस में क्या होने वाला है? नंबर 1, विल बी फोकसिंग ऑन फाउंडेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, बेसिक लेवल. ओके. सेकंड, अलाइनमेंट विद यूपीएससी सिलेबस. जितना भी हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है वो 51 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो वी आर गोइंग टू अलाइन ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद द सिलेबस इटसेल्फ. नंबर 3, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग. ऑल ऑफ यू नो कि जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव लेवल पे होता है, और आप सब लोगों को आंसर राइटिंग सीखना शुरू करना पड़ेगा, है ना. वी डू नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम, तो स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग शुरू करेंगे. एंड नंबर 4, द ओवरऑल पैकेज इज़ वेरी हॉलिस्टिक इन नेचर. तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो बेसिक लेवल फाउंडेशन हिस्ट्री ऑप्शनल की वो कंप्लीट हो जाएगी. यू आर गोइंग टू गेट मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स अलॉन्ग विद दिस. ओके. 100+ सेशन है, चारों पार्ट कवर होंगे. थीम वाइज सेग्रीगेटेड डायग्राम, फ्लो चार्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं. देखो, अगर हम सारी एनसीईआरटी को कंबाइन कर दें, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ वेरियस बोर्ड्स ऑफ इंडिया, तो 25 से 26 एनसीईआरटी निकल के आती हैं. उन सबको हमने कोहेरेंट फॉर्म में डिज़ाइन किया है सो दैट यू कैन लर्न द बेस्ट फ्रॉम दैट. ओके. बिकॉज देखो, हिस्ट्री में रिसर्चेस चलती रहती हैं. अभी तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू द रिसेंट हिस्ट्री देन द प्रीवियस हिस्ट्री जो कि आर एस शर्मा वगैरह, सतीश चंद्रा या फिर बिपिन चंद्रा ने लिखी हैं. दैट्स वाई वी आर कवरिंग ऑल द एनसीईआरटीज एंड दैट्स वाई 100+ सेशंस हो जा रहे हैं टोटल मिला के. देन 30+ वैल्यू एडेड आपको डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं. डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन मिलेंगे. जूम सेशंस भी करेंगे बाद में, ताकि आप लोगों की जितनी भी डाउट्स हों विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग दे कुड बी सॉल्व्ड. ओवरऑल जो है आपको क्लास की पीपीटीज मिलेंगी, कंसेप्ट लिस्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से हमने डिज़ाइन कर दिया ताकि आप सब उनको अच्छे से पढ़ सकें. माइंड मैप मिलेंगे पूरे सिलेबस के, वर्कबुक और लर्निंग असाइनमेंट्स मिलेंगे, एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सो दैट वंस यू लर्न समथिंग तो साथ में उसको एटलीस्ट इवेल्युएट भी करना चाहिए ना, कि भाई हमें कुछ समझ में आया भी है, नहीं आया, एटलीस्ट जितना रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं. तो आपको करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू दैट, सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए. ठीक है. आपको एक स्पेसिफिक गूगल शीट मिलेगा, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए. देन एज ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, हर किसी के पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक कॉल आएगा, एंड दैट इज समथिंग विच वी आर कॉलिंग एट स्क्रीनिंग प्रोसेस. बिकॉज अगर हमें आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वी कैन हेल्प दे आर ऑलवेज लिमिटेड इन नेचर. सो अकेडमिक काउंसलर इज गोइंग टू कॉल यू, दे गोइंग टू हेल्प यू और दे गोइंग टू अंडरस्टैंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. हो सकता है आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, और यू मे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सम टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस चाहिए होगा. एंड फाइनली ऑन द basis of this, you're going to get the benefit of this program.